Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो फ्रेंड्स, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर। क्यों मेरा फेवरेट है? हर मार्केटर का फेवरेट है, क्योंकि जब कंज्यूमर का बिहेवियर समझ में आएगा तो ही तो हम हमारे स्ट्रेटेजीज बनाएंगे ना कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, वो कभी देखेगा मेरा वीडियो, वो कभी लाइक करेगा, उसे पसंद है, उसे नहीं पसंद है, वो वीडियो में क्या पसंद आया, या फॉर दैट मैटर, जस्ट जोकिंग, फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूमर्स पे ही तो डिपेंड है, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग, करेक्ट? सो आज हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। The first factor which influences the consumer behavior is the marketer's effort, the 4 P's of marketing. अगर मेरा प्रोडक्ट एक्सीलेंट है, अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस प्रॉपर है, कंज्यूमर को लगता है कि उससे वर्थ है, उससे वैल्यू मिल रहा है प्राइस के लिए, अगर मेरा प्रमोशन स्ट्रैटेजी जबरदस्त है, मैंने बहुत सारे जगह पे एडवर्टाइजमेंट किया है, प्रमोट किया है, शोज किए हैं और कंज्यूमर अवेयर है, एंड फाइनली अगर मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्लेस जब कंज्यूमर को चाहिए, जहां कंज्यूमर को चाहिए, तो डेफिनेटली कंज्यूमर is going to be influenced by all 4 P's and his buying behavior is going to convince him that yes, this product is right and he will buy it. अब मैं सारे फैक्टर्स वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी स्लोली। एक एग्जांपल लेते हैं ज्वेलरी का आज हम, जैसे कि तनिष्क शॉप। अभी ये फीमेल डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी में डील करते हैं तनिष्क वाले। इनके चारों पीस बहुत ही सुपर है, तो जब कंज्यूमर जाते हैं प्रोडक्ट को लेने तो वो चारों के चारों उनके पीस उसको अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज मार्केटिंग फैक्टर्स दैट आर ऑल 4 P's ऑफ मार्केटिंग। My second factor which influences me is the demographic factor, or I can say personal factor. इसमें सबसे पहले आता है एज। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। When I go to buy a jewelry, if I want to buy it for myself, I feel, oh wow, I have lot of time. But if I want to buy it for a 5-year-old daughter of mine, she will feel, please mama, I am bored. Please buy it quickly. Let us go from this shop. I want to have this toy. I want to have that toy. तो age also matters. तो मेरा बाइंग बिहेवियर जो होता है, जो मेरे लिए जब ज्वेलरी बाय करती हूँ, तो आई इन्वेस्ट मेजरली like 40 to 45 minutes. For my daughter, my decision would be hardly 5 to 7 minutes, because उसको चाहिए भी क्या, small earring या ऐसा कुछ which is not so expensive. So second point is income. अगर मुझे कोई एकदम सस्ती चीज खरीदनी है, जैसे कि सोप है, शैम्पू है, I will not go through a long process. My process will be very simple. But if I want to buy a diamond jewelry worth rupees 1 lakh or 2 lakh, I will go through a long process, right? I will think, I will ask 2 people whether it's looking good on me or not. Second is gender. मैंने देखा है कि males are very quick in shopping, but females take a little longer time. So both male and female have different consumer buying behavior. Next is education. See, when you are aware of things, your buying behavior may be quick. In urban areas, people buy quickly things, but in rural areas, they take a little longer. And last is income. What is the meaning of income? When you have money, पैसा बोलता है. When you have lot of money in your pocket, your buying behavior becomes a little quicker and faster. But a person who has limited amount of money, he has to really make decisions whether I should buy this or this. Third point, the third factor which influences the buying behavior is your psychological factor. This includes your attitude, your motives and your perceptions. Now, what is your attitudes toward the product? Suppose I am buying a gift watch for my husband to gift him for an anniversary. My attitude is totally love. My motive is love. And my perception is that he should like the product. So my buying behavior will be according to his perception. But if I am buying something, say for myself, if I am buying a gold watch for me, it should be actually
suiting my profession, it should be the way I look, it should present my personality. My motive is it should be rough and tough because I travel here and there, so it should last for a long time. So psychological factors also influence the consumer buying behavior. Next factor is situational factors. See students, when I buy, you know why malls they have good soft music, स्मेल अच्छा होता है. यस, व्हाई? दिस इज बिकॉज आपका मूड एनहांस होता है शॉपिंग के लिए. जब आपका सराउंडिंग, आपका वो मोमेंटरी कंडीशन, जब भी आपका मूड, वो मोमेंट पे अगर आपका मूड खराब भी है, बट अगर अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाते हो और मॉल में कोई अच्छा गाना बज रहा है आपका फेवरेट, और आपका फेवरेट परफ्यूम का स्मेल है, ऑफ कोर्स योर मूड इज एनहांस. तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका मूड एनहांस हो जाता है और आप बाय कर लेते हो. और अगर कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, आप बहुत अच्छे मूड में गए हो शॉपिंग के लिए और मॉल में कोई आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और बहुत ही रश है, भीड़ भाड़ बहुत कुछ है, बहुत क्राउडेड प्लेस है, तो आपने जो सोचा है खरीदने का वो भी आप नहीं खरीदोगे. मतलब when the situation, जो सिचुएशन एट दैट मोमेंट ऑफ बाइंग है वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है. इसमें क्या क्या आ जाता है? आपका सराउंडिंग्स, आपका टाइम फैक्टर, आपका मोमेंटरी कंडीशन. मोमेंटरी कंडीशन मींस आपका तभी का मूड. नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स इंक्लूड ऑल योर फ्रेंड्स, योर पर्सनैलिटी, योर रोल इन द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, my friend, if I take her for shopping in Tanishq and I show her a nice earrings, she says नहीं अच्छा लग रहा है. Oh, I liked it, but just because she said it is not good, I won't buy. Because she affected my buying behavior process. I didn't like contradictory situation. देखो, I took my sister along with me for shopping. I showed her a earring. She says, it's good यार. Okay भैया, ठीक है, इसका cost क्या है? I will get interested into it. Of course, the second thing is my role in the society. I am a lecturer, so accordingly I will buy some formal type of earring or something like that. Not a person, if I take a housewife with me, she may buy some traditional type of earring. So my role in the society, my income, all that also matters. And last point is cultural factors. Of course, let me give you an example. Take a small example of McDonald's again. Buying people in America, they are totally different cultural setup. वो लोग कैसे बर्गर्स खरीदेंगे? वो लोग तीखे, स्पाइसी बर्गर्स प्रेफर करते हैं. बट अपने इंडिया में जब मैकडॉनल्ड्स ने लॉन्च किया तो कीपिंग इन माइंड द कंज्यूमर, बच्चों से लेके बड़े तक सब आएंगे. And we will not prefer very spicy and very expensive burger. तो इंडिया में सबको वड़ा पाव बहुत पसंद है. तो कीपिंग इन माइंड द कल्चरल फैक्टर ऑफ इंडिया, मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया? एक आलू टिक्की बर्गर जस्ट फॉर ₹20 लॉन्च किया. तो ऑफ कोर्स अपना बाइंग बिहेवियर कल्चर टू कल्चर डिफर होता है. आई होप द फैक्टर्स influencing the consumer buying behavior are clear to you. If you like the video, stay in tune with Ekeeda and subscribe Ekeeda for more information. Thank you.